Good evening students. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Michael Faraday lesson 16 class 3 new Gunjan book. This is the last lesson for this book and I am very happy that I was able to create all the videos for all the lessons. This has happened because of your subscription, your like and your motivation and the comment which has motivated me to add videos for all the lessons all this while. So thank you to my dear subscribers and viewers who has watched my video and liked the video and subscribed my channel. This has helped many and very happy that I was able to contribute something better for the kids to learn with an understanding. Hope you have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. So today we are going to learn about one such scientist, Michael Faraday. Who is scientist? Scientist na yaru? Scientists are the person who will do the research to advance the knowledge in the area of any natural science. So they will try to find something, they will try to find the evidence, they will put an hypothesis and they test it, and from the test they gain the knowledge and they share the knowledge. இப்படி தான் scientists பண்ணுவாங்க. So if your mother is ill, what will you prepare for your food? So if you are ill for 2 days before the exam, will you go for the exam or will you sit back? பயந்து போய் வீட்டில் உட்காந்துப்பீங்களா? உடம்பு சரியில்லை, நான் எக்ஸாமுக்கு படிக்கலன்னு. We have to find the solution for small issues by ourselves. So Michael Faraday is one such example who used to find the solution for himself, who educated himself. He was the third children in the family and his father was a blacksmith. அவர்கிட்ட காசு இல்லை படிக்க வைக்கிறதுக்கு. He educated himself in different ways and he has become successful because of his courage and the passion. So ஒருத்தர் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு what are the things which we needed? Creativity, passion, patience, hard work, desire to improve பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும், யோசிக்கணும், கமிட்மெண்ட், மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும், ரொம்ப பிரேவாக இருக்கணும், ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், and we have to learn from this mistakes. So இந்த மாதிரி ஒரு characteristics இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக we will be able to achieve success in our life. So Michael Faraday was one such person who was very hardworking. He had the desire, he had the passion to become a scientist. Now we'll study what are the issues he had and how he faced and how his childhood was. Michael Faraday கூட ஒரு apprentice 7 years he was doing book binding work only, where he got to get many books and he studied and he improved his knowledge. So book binding தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விடலை. He was doing that with lot of interest. அதே நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தார், பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருந்தார். So that shows his dedication, his honesty towards the work. So in a brief, Michael Faraday was born in a poor blacksmith family. At the age of 6 years only, he was able to go to school. His father was unable to buy books. So at the age of 13, he stopped him going to school and he told him to give newspapers to all around the places, houses in London, and he used to go to work as a bookbinder in the bookshop. He does the work with lot of dedication and honestly, and the owner was very happy. He used to give some money to Michael Faraday to listen to the lectures of Humphrey Davy. After listening to the lectures, he used to make the notes, what all he had listened, and he used to send that notes to Humphrey Davy. This is how he has gained the knowledge. He got the attention of Humphrey Davy and he became the student for Humphrey Davy. So Michael Faraday, so அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா, electromagnetic invention through which the electromagnetic rotatory device were able to be in use, and because of which we are using the fan, train, motors, machines, grinder, all the electric appliances were able to come into existence. That made our life very easy. He has invented electromagnetic technology இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு வந்தது பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் इन्वेंशन. बातों में पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? या to make the fan to work, television to work, to computer work, we need electricity. So how this electricity is produced? Do you know? Yes, one way of producing electricity was during the electromagnetic, but yeah, they used to produce the electricity.
किसी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? टू बी सक्सेसफुल इन एनी वर्क व्हाट यू हैव टू डू द वर्क विद हॉनेस्टी. किन्हीं दो वैज्ञानिक के नाम बताओ. कैन यू टेल इन टू साइंटिस्ट नेम? पुट इन द कमेंट सेक्शन. எந்த साइंटिस्ट பேர் உங்களுக்கு தெரியும்ன்றது पुट इन द कमेंट सेक्शन. मेहनत और लगन से सफलता मिलती है. विद द हार्ड वर्क एंड द डिटर्मिनेशन वी कैन बी सक्सेसफुल. गरीब परिवार में जन्मे माइकल फेराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन सके. बिकॉज ऑफ दिस characteristics which he had to do the hard work and the determination, keep on doing things again and again. Though he was born in the poor family, he became a scientist. Vaigyanik ne another scientist. So he is Michael Faraday. So he was an English scientist born in London, and most of his studies were electromagnetism and electrochemistry. So இந்த electromagnetismனால தான் electricity produce பண்ணுறாங்க. அந்த electromagnetic rotatory deviceலாம் existenceக்கு வந்துச்சு. இந்த technology வச்சு தான் motors were used. This is the experiment he has done. You can go and check with your science teacher if you are more interested. So electromagnetic waves அதை பார்த்த உடனே தான் அது rotate ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, and he has understood that electricity மூலமாக mechanical energy produce பண்ண முடியும் அப்படின்னு. So he was born on 22nd September 1791 and died on 25th August 1867. So he is considered as the father of the electric motor, electric generator, electric transformer and electrolysis. So எல்லா இந்த மோட்டர் டிவைசஸ் எல்லாத்துக்குமே இவர் தான் ஃபாதர். இவர் வந்து கண்டுபிடிக்கலனா அந்த ரொட்டேட்டரி மோஷன் நம்ம வந்து அப்ளையன்சஸில் கொண்டு வந்திருக்க முடியாது. Because of his invention, the electric energy was turned into mechanical energy, and that mechanical energy which is we are using our different electrical appliances. Iron box ஆ இருக்கட்டும், fan ஆ இருக்கட்டும், mixie ஆ இருக்கட்டும், grinder ஆ இருக்கட்டும், எல்லா வேல்யூ மெக்கானிக்கல் ஒர்க் செய்ய வைக்கிறது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக இவர் கண்டுபிடிச்ச இன்வென்ஷன்னால தான். ஐடென்டிஃபை ஏதாவது சயின்டிஸ்ட் பேர் உங்களுக்கு தெரியுதா? திஸ் இஸ் a ஸ்மால் டாஸ்க். இதில் ஏதாச்சும் சயின்டிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேராக இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. எதுக்காக நான் இப்போ படிக்கிறேன்? மைக்கேல் ஃபெராடே பற்றி படித்து நான் என்ன கற்றுக்க போகிறேன்? வாட் ஐ எம் கோயிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் லெசன்? எஸ், யூ ஹாவ் டு லேர்ன் தட் யூ ஹாவ் டு டூ ஹார்ட் ஒர்க், யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் அண்ட் டு be brave in your life. You have to improve your science knowledge, you have improve your mental strength. So all the work are work. As small works, big work lang kadiyadu. Whatever work you are doing, you have to do with an honesty, with a dedication. That will make a turning point in life to do something better. This is what the introduction and learning outcome is. Now we'll read the lesson and understand the childhood of Michael Faraday. सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते ही हो. ஸோ டெய்லி ரோடில் ஸ்பீடாக போகிற வெஹிக்கிள்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. तेजी से ना ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறது. बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा. ஸோ பஸ்லேயும் ட்ராம்லேயும் நிறைய வாட்டி போயிருப்பீங்க, அதை என்ஜாய்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. बिजली के पंखे और इस तरह कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो. ஸோ ஃபேன், எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபேன் அண்ட் அது மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். யூ வுட் பி அவேர் ஆஃப் இட். ஸோ டிவி, கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே with the help of electricity only it is working. कारखानों में तरह तरह के मशीनें इन फैक्ट्रीज, कारखाना फैक्ट्रीஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இருக்குது. அந்த மெஷின்ஸும் ஓடுது இல்லையா? இட் இஸ் ஆல்சோ ரன்னிங் த்ரூ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रोटेटरी डिवाइस था அதுவும். ஸோ இது எல்லாமே क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीन किस प्रकार चलती है? डू यू नो हाउ दिस मशीन्स आर मूविंग, रोटेट ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? ये मशीन बिजली के चुंबक से चलती है. ஸோ இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாமே ஓடுறதுக்கு திங் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக். ஒரு கரண்ட் பேட்ரி வச்சு ஒரு அயன் மெட்டீரியல் வச்சு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது electromagnetic effect is generated. So बिजली की चुंबक ना electricity is produced using the magnetic effect. बिजली के चुंबक की खोज माइकल फेराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी. So the बिजली की चुंबक சொல்றோம் இல்லையா, electromagnetic effect invented by the scientist Michael Faraday. फेराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई. Because of this invention, electromagnetic effect and the technology இவர் கொடுத்தனால வேர்ல்ட் லெவலில் நிறைய திங்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆச்சு. யூ கேன் சி த பஸ்ஸஸ், ட்ராம்ஸ் அண்ட் த மெஷின்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் த ஃபேக்ட்ரிஸ், ரைட்? ஆல் திஸ் மெஷின்ஸ் தட் ரொட்டேட்ஸ்
Do you know how it runs? It all runs because of the invention which Michael Faraday has done, the electromagnetic induction. This is the test which he have done. இந்த மாதிரி டிவைஸ் தான் இவர் ரெடி பண்ணார். ஓகே, ஸோ இந்த பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு when the electricity was passed, it created a mechanical rotatory motion create பண்ணுச்சு, and this technology only used in the most of the electrical appliances now. परंतु बट बाल्यकाल अवरोड चाइल्डहुड இருக்குல்ல में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ही हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज इन हिज चाइल्डहुड. सो उसका इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर माइकल फेराडे. कजन एक गरीब लोहारना ब्लैक स्मिथ, அந்த இரும்படிப்பாங்கல்ல அவங்க தான் लोहार के घर हुआ था. माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा. सो फ्रॉम द एज ऑफ 6 ओनली ही स्टार्टेड टू गो टू स्कूल. पर उसके पास किताबें नहीं थी, बट ही डिडंट हैड एनी बुक. इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी. ही यूज्ड टू हैव मच डिफ़िकल्टी. द फादर इज़ डूइंग द ब्लैक स्मिथ वर्क एंड द लोहार, एंड he has to help his father in this work also. So he was able to go to school at the age of 6. But அவங்க அப்பாக்கும் வந்து ஈவினிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். लेकिन वह घबराया नहीं. But he was not afraid that he didn't had books. मन लगाकर पढ़ता रहा. He with lot of interest he used to keep reading. साथ ही along with that पिता के काम में हाथ बटाता रहा. He used to help his father in his blacksmith work லியும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருப்பான். इस प्रकार 7 साल बीत गए. So helping his father going to school, 7 years has passed on. Now he has become 13 years. अब माइकल 13 वर्ष में he has become 13 years का हो गया. परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया. बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी ना पॉवर्टी, காசு இல்லாததுனால ஸ்கூல் போகிறது நிறுத்திட்டாங்க. he was not sent to school. So he started at the age of 6 and he stopped at the age of 13. बेचारा बेचाराना हेल्पलेस, ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் இருக்கிறது. बेचारा माइकल मन मारकर रह गया. मन मारकर रह गया इस मुहावरा saying that நம்மளோட டிசைரை நம்ம கில் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஸோ he had a desire to go to school, but because of the poverty his father could not send him to school. पिता की आज्ञा के अनुसार, according to the order which the father gave him, उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया. he started to distribute the newspaper. अखबार ना न्यूज़पेपर से கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्लत बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिली. जिल्लत ना बाइंडिंग वर्क, புக் பைண்டிங் பண்ணுவாங்களே அந்த கடையில் அவருக்கு வேலை கிடச்சிச்சு. ஸோ ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் தேர் ஃபார் 7 years. ஓகே, இஸ் பஹானே, ஸோ இந்த எக்ஸ்கியூஸ்னால தான், சின்ஸ் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டூ த பைண்டிங் ஒர்க், ஹி காட் மெனி புக்ஸ் इन हिज हैंड्स. सो किताब पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ. ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रीड मेनी बुक्स. एज पर हिज फादर्स ऑर्डर he started to distribute newspapers and he used to do the binding work. Seeing this work which he was doing, though it was a very small work or big work, he doesn't mind. He did that work also with lot of honesty and truthfully he did that work. He got an opportunity to read many books. So Faraday परिश्रमी बालक था. He was very hard working. This was his characteristics. वह अच्छे जिल्दे बांधता था. He used to bind it very nicely. इसलिए बिकॉज ऑफ विच उसका मालिक அவரோட ஓனர் उससे खुश था. सो அவரோட बाइंडिंग वर्क वॉज सो गुड दैट हिज ओनर वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क. यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती, इफ़ इन द शॉप एनी बाइंडिंग वर्क வந்து ஏதாச்சும் எலக்ட்ரிசிட்டி ரிலேட்டட் புக்குக்கு வந்துச்சுன்னா, இஃப் எனி ஒர்க் இஸ் கம்மிங் டு बाइंड द बुक विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वह उसे अवश्य पढ़ता. ही यूज टू रीड दैट बुक फॉर श्योर. सी ड्यूरिंग दिस टाइम ही इज़ रीडिंग द books based on the electricity that comes to the shop for binding work. एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही एक किताब में मग्न देखा. मग्न ही was so attached, इंटरेस्ट அப்படியே முழுகி போயிட்டு அந்த புக்கை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுல. वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था and that old person saw him reading the book with so much of interest and that old person himself was a scientist. इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया. Seeing a small boy reading such tough books, he became very shocked. चकित रह गया मीन्स he became very surprised, शॉक आइटा. उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? he asked. उसने इस सर्वनाम यूज्ड फॉर दैट वृद्ध व्यक्ति. ओके, वेयर यू आर स्टडिंग, तुम कहाँ पढ़ते हो? वेयर यू आर स्टडिंग, मैं कहीं नहीं पढ़ता. आई डोंट स्टडी एनीवेयर, मैं ये जिल्दे बांधता हूँ. आई जस्ट डू द बाइंडिंग वर्क. माइकल ने उत्तर दिया. सो माइकल रिप्लाइड टू दैट ओल्ड पर्सन हु इज़ अ साइंटिस्ट. मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है. आई लाइक टू रीड द बुक्स विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी.
जानकारी बढ़ाने के लिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. So to improve my knowledge, to gain more knowledge related to electricity, I am reading this book. நான் இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னோட மூளையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு. Like that, Michael is replying to that old person. So the old man saw him reading the book with so much of interest, and he is asking where he is studying, what he is doing. So he is replying that he doesn't go to school and he does the binding work, and he likes to read the books that is related to electricity. वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ. Now he was very happy hearing the answer from Michael. उसने सलाह दी. He suggested, he advised him. यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो, so if you want to increase the knowledge based upon electricity, तो सर हैम्फ्रे देवी की भाषण सुना करो. So you go and listen to the lectures given by Humphrey Davy. Humphrey Davy is another scientist. Go and search in internet who is Humphrey Davy and what he has invented. Okay, it's Humphrey Davy. So he was born on 17 December 1778 and died on 29th May 1829. So he has influenced many such scientists like Michael Faraday, Lord Kelvin. What he has done is, so he is a British chemist and inventor who invented Davy lamp, arc lamp. He has given details about laughing gas. So go and check in internet to get more details. माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा. सो आफ्टर ही गॉट द सजेशन फ्रॉम द पर्सन हु साइंटिस्ट गो एंड लिसन टू Humphrey Davy's lectures, he went there. तुरंत ना अटवांस अपने भाषण ना அந்த लेक्चर्स கேட்கறதுக்கு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டான். वहाँ जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी था. सो टू लिसन टू द लेक्चर्स दे हैव टू बाय द टिकट्स. मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा. सो गेटिंग द मनी फ्रॉम द ओनर ऑफ द शॉप ही वेंट एंड लिसन टू द लेक्चर्स. लौटने पर मालिक ने पैसे काट दिए. सो इन द इवनिंग व्हेन ही गोस होम द मालिक द ओनर हैज कट द टिकट मनी एंड गिवन द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर हिज डेली वेजेस. शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले. सो द फादर इज नाउ scolding him that he has spent his money unnecessarily listening to the lecture of Humphrey Davy instead of giving the money for the family. So इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो. And the father told, don't waste the money like this in listening to the lectures. So he is going and getting the ticket and listening to the lectures given by Humphrey Davy. So now as soon as he comes back, seeing the money which is lesser than the everyday's wage, the father is shouting at him not to waste the money in buying such tickets. So अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई. So next day he was very worried because he cannot spend the money but he want to listen to the lectures. So इधर पाताने this owner felt very kind पातार and उन्होंने कहा and he said, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दिया करूँगा. For your ticket money I'll pay you, like that the owner has said. Seeing the Michael very sad, owner became so kind and he came forward to help him, saying that he will pay the money for the ticket to listen to Humphrey Davy's lectures. तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा. From your wage I will not reduce, like that the owner said to Michael Faraday. So now seeing him sad, the owner has sponsored for the tickets. माइकल की कामना पूरी हुई. नाउ ही वॉज एबल टू लिसन टू द लेक्चर्स. वह देवी साहब के भाषण सुनता. ही यूज टू लिसन टू द लेक्चर्स ऑफ हैम्फ्री देवी. उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता. सो वॉट एवर ही हैज लिसन ही यूज टू राइट द नोट्स एंड ही यूज टू मेक द डायग्राम ऑल्सो. कुछ दिन पश्चात आफ्टर सम डेज वह उनसे मिला. ही मेट हिम ऑल्सो. हो उनसे ना डेविए पाता. यार वह is the sarvanam used for Michael Faraday. So Michael Faraday was able to see Humphrey Davy. So वह is used for Michael, उनसे is used for Humphrey Davy. सर Humphrey Davy को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया. So he was very impressed with that such होनहार ना वो स्मार्ट आना पाए ना पाते. Humphrey Davy was very impressed. उन्होंने मीन्स इस सर्वनाम used for Humphrey Davy. माइकल को अपना शिष्य बना लिया. So he made him as a student. माइकल उनके साथ रहने लगा. नाउ ही यूज्ड टू स्टे विथ हैम्फ्री डेवी और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा. ही यूज्ड टू गेट देयर नॉलेज फ्रॉम हैम्फ्री डेवी. इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया. सो लाइक दिस ही हैज फेस्ड मेनी सच चैलेंजेस एंड लेटर ऑन ओनली ही वाज एबल टू बिकम साइंटिस्ट. Hope you have understood the lesson. If you have any clarification or doubt, please put in the comment section. In the next video, we'll see the book back exercise and question answers. Thank you, students.